Okay, so we'll be starting with the next topic, which is also a part of your pectoral region only. Okay, you have already completed with the pectoral region? Yes or no? Yes. So, how many students remember the muscles of the pectoral region? Just raise your hands. How many students remember the muscles of pectoral region? Raise your hands. Nobody remembers. Okay, these students. What about others? Are you not studying the theory lectures which have been taught to you at home? हाँ, आप लोग थ्योरी लेक्चर्स घर पे नहीं पढ़ रहे हैं क्या जाकर? How will you going to dissect the pectoral region today then? You have to dissect the pectoral region today, and if you are not even knowing the names of the muscles, how you will understand this lecture and how you will be going to dissect? Today's lecture is the most important lecture of upper limb. 100% chances are there that a question will be asked in your examination theory, your practicals, and also this topic is very, very important for your future also whenever you will go for a practice, because this topic is directly or indirectly related with one of the most cancerous or carcinomous growth in the human body, basically the females, that is the breast cancer. Yes, तो इस पे आपको बहुत सारे अटेंड करने के लिए सेशंस भी मिलेंगे, तो आज का लेक्चर वैसे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट दिस लेक्चर कैन ओनली बी टॉट इफ यू रिमेंबर द पेक्टोरल रीजन. अगर आपको पेक्टोरल रीजन नहीं पता है तो आप रिलेशंस कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे. So once again I am advising you all that whatever theory lectures you are doing over here, it is your responsibility to just go through them once when you reach home. Okay? Please come fast. So we'll be starting now with the first topic, that is a very, very important, breast, and you all know it is a part of the pectoral region, that is the front part of the chest. Okay? Now in the picture you can clearly see this entire is your pectoral region. Yes? And this structure is the outline of the breast. Okay? Breast is, to be more specific, it is lying in which layer of the pectoral region? Any idea? Anyone? It is lying in the superficial fascia of the pectoral region. Means it is a superficial structure. Okay? It is not a deep structure. ठीक है? सबसे पहले हमें स्किन की लेयर दिखती है. जैसे हम स्किन रिमूव करेंगे, we will find the superficial fascia, and in the superficial fascia you find lot of fatty fibrous tissue. Yes, in the pectoral region. That is nothing but the glandular tissue of the breast. Okay, very important structure. This is the most important entity of mammals. Yes, breasts are also known as mammary glands, and mammary glands makes mammal always, you can say they are always ahead. आप अगर हम evolution की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा evoluted जो species है वो कौन है? Mammals, because they are having the mammary glands for the nourishment of the newborns. Yes, so this is very important. Okay. First of all, if we talk about the peculiarities of the class Mammalia, you all know it is the breast. Breast is basically derived from the term mamma. Mamma is a Latin word which we use in anatomy, and from mamma only we have derived the mammary glands. Okay. Now, what is the location? We have discussed it is located in the pectoral region. To be more specific, it is located in the superficial fascia of the pectoral region. It is well developed in the females after the puberty. Okay, before puberty, that is the pre-pubertal age, it is rudimentary in case of females. And what about males? It is rudimentary throughout the life in case of males. So you should remember these points. Okay. If we talk about the post-delivery period, yes, there is a pregnancy period, then a delivery phase, and ultimately the post-delivery phase. During the post-delivery period, the breasts are the only source for secretion of milk that is used for the development and feeding of the newborn. Nourishment, nurturing of the newborn, this is being served by the breast, which are then a lactating organ
which is secreting milk for the nourishment. Okay, so this you all know, and I think you have studied this in your earlier classes. Yes, what is happening over there? Yes, stand up. Stand up. क्या बात कर रहे हो? हाँ, वहां देख के क्या बात कर रहे हो? लेक्चर कहाँ चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है. अगर आपको अटेंड नहीं करना है आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, बट डोंट डिस्टर्ब मी इन माई क्लास. Whenever I'm taking a lecture, you should be quiet, and if you are not interested, you can leave, because nobody forces you to come and attend the lecture. You are coming over here only for two reasons: either you want to learn something or become a good doctor, or secondly you want to just take your attendance. तो दोनों में से जो भी आपका रीजन है, I am not at all interested. But if you are sitting over here, you are not supposed to disturb me or other students. This is for all the students. You should remember, if you are sitting in the lecture theater, you should maintain the dignity of the lecture theater. You are not coming here for sitting and chit-chatting. No. This is not at all accepted. अगर आपको कुछ discussion करना है, आप wait कर सकते हैं. After the lecture, you can discuss. And if you are having some problem in between, you can stand up and you can ask. Not an issue. ठीक है ना? Last time मैं आपको बोल रही हूँ, first और last जो भी है, next time I'll immediately just throw you out of the lecture theater, and I will not give you attendance for the 3 complete hours. 1 for lecture and next 2 for DH. Sit down. Don't disturb. Okay, so location we have discussed. It is lying in the superficial fascia of the pectoral region. Now there is a term which is known as axillary tail of spans. ठीक है, ये term आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. इस पे MCQ भी पूछा जाता है. What is this axillary tail of spans? इसके लिए हम ये पिक्चर देख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द ब्रेस्ट. यस, एंड कैन यू सी दिस एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज नोन एज सुपेरोलेटरल एस्पेक्ट. ठीक है, अगर हम एनाटॉमिकली रिलेट करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा ब्रेस्ट का? सुपेरोलेटरल. ये वाला सुपेरोमीडियल, ये वाला इंफेरोमीडियल, एंड दिस वन विल बी इंफेरोलेटरल. तो जनरली क्या प्रीवियस बुक्स में एक कंसेप्ट था जिसमें हम ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते थे: सुपेरोलेटरल और अपर लेटरल, और अपर मीडियल, लोअर मीडियल, लोअर लेटरल, या फिर इंफेरोमीडियल, इंफेरोलेटरल. ठीक है, तो ये जो सुपेरोलेटरल पार्ट है, एस्पेक्ट है ब्रेस्ट का, वहां पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. दिस इज मोर इनटू एन इमेजिनरी स्ट्रक्चर. व्हाई? बिकॉज ये पूरा का पूरा सुपरफिशियल फेशिया के अंदर है ना? तो सुपरफिशियल फेशिया इज मोर ऑफ अ फैट. तो वहां पे आप ट्रेस नहीं कर सकते कि कोई टेल मिलेगी, नहीं. दिस इज अ पार्ट ऑफ सुपरफिशियल फेशिया. तो यहाँ पे फैटी स्ट्रक्चर ही है, बट इट इज एक्चुअली जस्ट लाइक अ टेल विच इज एंटरिंग इनटू द एक्सिलरी पार्ट. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पैंस. ठीक है, तो दिस इज नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पैंस, एंड इट इज लोकेटेड इन द superolateral quadrant of the breast. ठीक है, this is extension of breast from its superolateral part. It is piercing the deep fascia in the axilla. So this is running up till the axilla. Axilla का superficial fascia के बाद में जो deep fascia है उसको भी pierce करके वहां तक इसका extend जाता है. ठीक है, means you can clearly say that the content of the breast is extending up till the axilla. ठीक है, एक्सिला पे लेक्चर हो गया आपका, अब होगा, है ना? तो व्हेन यू विल स्टडी द बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ द एक्सिला, अगेन दिस थिंग विल बी रिपीटेड. ओके, देन हाउ इट pierces the deep fascia in the form of a foramen, and that is known as foramen of Langer. Okay, so what is foramen of Langer? It is an opening in the deep fascia of the axilla from where the tail of spans enters. Is it clear? तो ये 2 टर्म्स आपसे वाइवा में, MCQ में पूछे जा सकते हैं. What is axillary tail of spans? What is foramen of Langer? And see, this opening है ना, serves a route also for the spread of cancerous growth. Yes, अगर कोई लंप बन रहा है ब्रेस्ट में, या कोई कार्सिनोमा के चांसेस हैं, कोई ट्यूमर के चांसेस हैं, तो थ्रू दिस रूट इट कैन स्प्रेड. हाउ इट विल स्प्रेड? व्हाट इज द मेन structure, or you can say what component is responsible for spread of cancerous cells? Through which system? Lymphatics. Yes, so lymphatics of breast are most important to study, and whenever you are examining a patient, you need to check for the lymph nodes. Lymph nodes present in the axilla, lymph nodes present around the
breast, so that we can palpate and see whether any lymph node is swollen or not, so that we can go for a further biopsy or diagnosis. ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, नेक्स्ट इज द shape of the breast. Okay, shape of the breast is variable. It depends on female to female. Generally it is hemispherical, conical, piriformis, pendulous or flat. It depends on the age factor as well as the body structure of the female. So variable shapes of breast are present. Extent of the breast, see, vertical extent and horizontal. आपको दोनों पता होना चाहिए. Vertical extent, it is extending from second to sixth ribs. ठीक है, pectoral region का भी extend यही था. Yes, so the breast is also extending from second to sixth ribs vertically. And what about horizontally? Which bone is this? Sternum. So it is basically extending from the lateral border of the sternum till here. This is the mid-axillary line. So approximately from lateral border of sternum to the mid-axillary line, the breast extends. Clear to all? Yes? Okay. So here you can now see once again first picture. आप एक बार दोबारा से देख लीजिए. This one is actually the extent of the breast. ये देखो यहाँ पे second to sixth rib तक तो यहाँ extend करेगा, और from lateral border till the mid axillary line is the horizontal extent. Okay, rest comes the structure. This is the structure of the breast which we'll be studying, and इसको पढ़ने से पहले we should know about the relations also. Breast is lying superficially, yes, in the body, so definitely the relations will be deep. So we have to study now the deep relations of the breast. So coming to the deep relations, आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे अगर हम ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अभी अगर आप अपने कैडावर पे डिसेक्शन भी करेंगे, तो इफ यू आर हैविंग अ फीमेल बॉडी, देन व्हेनेवर यू आर पुटिंग द इंसिजन्स, यू आर पुटिंग अराउंड द ब्रेस्ट, एंड देन यू आर मूविंग अगेन टू द ज़िफिस्टर्नल एंगल, और आप उस हिसाब से जाएंगे, है ना. तो जो भी आपका circle है, that is the breast, that you can leave intact on the body, and on one side you can just take it out along with the superficial fascia in order to dissect the interior structure of the breast, so that you can see the stroma, parenchyma. Okay, you can also see many lactiferous ducts, the lactiferous sinuses, the lobes which are responsible for production of the milk. Yes, तो उसके लिए हमें ब्रेस्ट का डिसेक्शन करना होता है. ठीक है, तो ये ब्रेस्ट अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो इसके डीप क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें पता होना चाहिए. तो वंस यू रिमूव द स्किन, द सुपरफिशियल फेशिया अलोंग विद द ब्रेस्ट, है ना, if you have removed, next what you will find? The deep fascia. Yes or no? So this deep fascia in the pectoral region is covering the muscles of the pectoral region. Yes, and which muscle is there? Pectoralis major. Yes, so just below the breast, जैसे हमने remove किया, what is present? Pectoral fascia. Then we'll find the muscles like pectoralis major, we'll find serratus anterior, and one more muscle is there, this muscle which is the muscle going to the abdominal wall, anterior abdominal wall, which is the external oblique muscle, है ना, which is having its aponeurosis also, जिसमें आपको पता होगा pectoralis major का insertion होता है. Yes or no? Yes or no? कहाँ पे insertion होता है? Insertion कहाँ होता है? आपने अभी yes बोला, that's why I want to see. Insertion is on the lateral lip of bicipital groove or intertubercular sulcus. So what is coming from here is the origin. You are saying yes. That's what I want to see. Origin, one of the origin of pectoralis major is from the aponeurosis of external oblique muscle, which is a muscle of anterior abdominal wall. Yes or no? पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा है? हाँ? ये नहीं पढ़ा? There are, I think, 4 origins of the pectoralis major muscle. Yes? So one is from the external oblique aponeurosis. Aponeurosis क्या होता है? What is an aponeurosis? Yes, batch 2025. नहीं पता? It is a flattened tendon. अगर हम टेंडन को फ्लैट कर देते हैं, which is cord like, और उसको अगर हमने फ्लैट कर दिया anteroposteriorly, it becomes an aponeurosis. Yes or no? ऐसे ब्लैंक बैठे हो क्योंकि आपने जनरल एनाटॉमी पढ़ी ही नहीं है. We are sure about it. We were feeling this, that you are not reading the general anatomy, which is very, very important. It is the base of anatomy.
और अगर आपने मसल्स ही नहीं पढ़े तो आपको कैसे समझ में आएगा व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ? Anyways, moving further, the relations, pectoral fascia. Below the pectoral fascia, you will find three sets of muscles, pectoralis major muscle. Can you see this is pectoralis major? Then you will find this muscle, which is again a muscle of the pectoral region. Padhiye? Serratus anterior. And then this is an external oblique muscle, which is the muscle of the anterior abdominal wall. Yes, external oblique muscle. ठीक है, इसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज द लूज एरियोलर टिश्यू. यस, क्योंकि सुपर क्या है, उसको जैसे ही हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लूज एरियोलर टिश्यू. वील फाइंड दैट. यस, एंड देयर विल बी अ स्पेस. दैट लूज एरियोलर टिश्यू इज सर्विंग एज अ स्पेस बिटवीन द ब्रेस्ट एंड द पेक्टोरल फेशिया. दैट इज नोन एज रेट्रो मेमोरी स्पेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रो? रेट्रो क्या होता है? बिहाइंड, बैक. रेट्रो से आप क्या समझते हो? पीछे, बिहाइंड. So just behind the mammary glands, we'll find a space which is filled up with loose areolar tissue. Yes? Why there is a space required? Anybody can answer this question? Yes? Very good. For the movement of the breast. If the breast is in mobile condition, then definitely they are healthy. Yes, they can produce milk. But if they are not mobile, if you find a patient's breast not mobile or immobile condition, definitely it means the patient is having 80% chances a carcinoma. It is benign or malignant, that is a secondary case, but fixation of the breast is one of the symptoms you check whenever you diagnose for a breast cancer. Okay, so the mobility of the breast is maintained by this loose areolar tissue, which is present between the pectoral fascia and the mammary glands, which is known as retromammary space. समझ में आ रहा है? ये अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत इश्यूज है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमने डीप रिलेशंस को कोरिलेट किया है. This is a flow chart now in which you can just have a recap of what all we have studied right now. So we have seen about the location of the breast, the shape of the breast, the extent of the breast, and the deep relations. Okay, moving further, again this picture you have to draw in the examination whenever a deep relations is asked. Who is using mobile phone? Stand up. क्यों क्लिक कर रहे हो? Need. बुक है? बुक है या नहीं है? तुम्हारे पास बुक है ना घर पे? बैग में है? तब आप देख सकते हैं ना, उसमें है. You are not supposed to use mobile phone in the theory class. कितनी बार बोलना पड़ेगा? In the theory and DH, no mobile phones are allowed. आपको मोबाइल फोन्स अपने बैग में रखने हैं. यहाँ पे मोबाइल फोन्स लेकर बैठने का मतलब है यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, यू आर ओनली यूजिंग द मोबाइल फोन. है ना? पिक्चर क्लिक करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज आपके पास जो बुक्स है उसमें सारे पिक्चर्स हैं. कुछ पिक्चर अगर आपको लगता है नहीं मिल रही है तो आप मेरे पास आ सकते हैं. यू कैन कम टू द कंसर्न फैकल्टी, आई विल प्रोवाइड यू, बट ड्यूरिंग द लेक्चर प्लीज डोंट डू दिस. सिट डाउन. ओके, सो दिस इज the breast and you can clearly see this is a lateral view. हम lateral view देख रहे हैं, ठीक है? Now here you can clearly see it is a section of the breast. Now this is the skin of the breast. The skin contains the structure known as nipple, which is basically used for sucking of the milk by the newborn. Then we are having a pigmented area around the breast, yes, which is known as areola. Okay, this pigmented area is because of the presence of melanin pigment. Okay, यहाँ पे melanin pigment present रहता है जिसकी वजह से इसका pigmentation होता है. This pigmentation also varies depending on the condition of the female. If there is pregnancy, the color of the areola darkens automatically because now the body is preparing for the lactation phase post delivery. Okay, then you are having this area which is the main glandular tissue of the breast. Okay, जो हम पढ़ेंगे parenchyma of the breast. And here now what you see, this is the retromammary space just behind the mammary glands. Okay, and here you find the fascia which is the pectoral fascia, this green color structure. इसके पीछे जस्ट ये आपको pectoral fascia दिख रहा है. Then the first muscle, this is pectoralis major. इसी के लाइन में आपको serratus anterior और external oblique भी मिलता है. बट अगर हम pectoral fascia के बाद pectoralis major के भी डीप जाते हैं
हमें एक और मसल मिलती है, कौन सी? पेक्टोरालिस माइनर. वंस यू कट द पेक्टोरालिस मेजर एंड रिफ्लेक्ट इट, you will see pectoralis minor, fibers of pectoralis minor. ये same dissection में follow करना है आपको, ठीक है? And can you see there is a covering of a fascia that is known as clavipectoral fascia. This fascia is very important. इस पे short note आता है 100%. Clavipectoral fascia पे short note आता है. This is a fascia which is covering the subclavius muscle also. It is also covering the pectoralis minor. Yes, and moving ahead. This is clavipectoral fascia. Means it is having its attachment to the clavicle as well as to the pectoral muscles. ठीक है? Now the main question, that is the structure of the breast, which is very very important. So we are having the components of the breast as skin, the stroma and the parenchyma. ठीक है? Skin मैंने अभी दो structures discuss किए आपसे, the nipple and the areola. ठीक है? तो दोबारा से आप देख सकते हो. Now you can see the interior of the breast. So this is the skin part of the breast where the nipples and the areola is lying. Then we find the stroma, okay, which is having lots of structures like, you can see the lobules are present, lobes of mammary glands. You can see these thin ducts, lactiferous ducts, which are ultimately converging and opening out through the nipples. So almost 15 to 20 lactiferous ducts are present, which are then opening on the surface of the nipple. Yes, now before opening, these lactiferous ducts shows dilations. Can you see? These are dilations. Can you see these dilations? These are nothing but the lactiferous sinus. Whenever we find a dilation, we call it as a sinus, cavity or sinus. ठीक है? उसके बाद में ये पूरा आपका glandular tissue है. Yes, and in between these lobes, can you see there is a division, है ना? Lobes के बीच में ये glandular tissue, ये fibrous tissue जा रहा है ना? This is nothing but this is a fibrous septa, which is formed by a structure which is known as suspensory ligaments of Cooper. ठीक है? Suspensory ligaments of Cooper is nothing but these are fibrous septa present between the different lobes of the mammary gland. ठीक है? Then इसके पीछे आपको retromammary space दिखता है. You find pectoral fascia, you find pectoralis major, and then you find pectoralis minor, and ultimately you find the rib cage. Yes, that is the ribs. Extend from second to sixth. समझ में आ रहा है हम किस तरीके से ब्रेस्ट को देख रहे हैं और एग्जामिन करेंगे. अगर आप कभी भी डिसेक्शन परफॉर्म करते हैं, यू नीड टू ऑलवेज गो फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, और एग्जामिनर्स भी आपसे वही पूछते हैं. आई कैन हियर समबडी इज टॉकिंग. हु इज टॉकिंग व्हेन सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इज गोइंग ऑन? व्हाट इज द नीड टू टॉक? अगर आपको बेटर आता है देन प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन इट टू मी so that I can also increase my knowledge. Anybody is interested? So you can stand up and give your views over it. You can tell about the structure of the breast. So first of all, if we're talking about the skin covering the breast, I have discussed the nipple, which is conical projection. Location is just below. What is the exact location of the nipple? It is located just below the center of the breast. Exactly center में नहीं है, just below the center of the breast, approximately at the fourth intercostal space. Now, one of you or any one of you can just have a curiosity that what is intercostal space. See, costa means ribs. Okay, we are having how many ribs in our body? 12 pair. 12 pair. If I talk about my right side, okay, right side I am having 12 ribs. So, in between the 12 ribs, for example, rib number 2 and rib number 3, there is a space which is in between the two costa, costa 2 and costa 3. So that is intercostal space. Understanding? So intercostal space is basically present between the two ribs. That is, for example, second or third or fourth. So in our body there are 11 intercostal space. Why 11? क्योंकि rib 12 है ना, तो there are obviously 11 intercostal space are there. So जो fourth intercostal space है, that cites the exact location of the nipple of the breast, which is just little below the midline. Okay, the center, and about 10 centimeters from the midline. So breast is exactly, the nipple is exactly not located in the midline. It is located approximately 10 centimeters away from the midline. What is the structure? It is pierced by 15 to 20 lactiferous ducts.
15 to 20 lactiferous ducts open on the surface of the nipples. Okay. Areola, we have discussed circular pigmented area which is surrounding the nipple. Now this areola is having numerous modified sebaceous glands. तो ये जो areola है, यहाँ पे numerous modified sebaceous glands are present, which are continuously secreting its secretion. What sebaceous glands secrete? They secrete what type of secretion sebaceous glands secrete? Oily secretion. So they are continuously producing oily secretion in order to keep the nipples and the areola moist. अगर oily secretion नहीं होगा, तो there might be cranking of the nipples or the areola region. Yes. So they are continuously present for the secretion. Okay. So skin of both the structures, nipple and the areola, is devoid of hair. And color मैंने आपसे discuss किया है, it becomes darker during the pregnancy phase. Okay. Coming to the next, skin हमने पढ़ लिया है. Stroma. If we talk about the stroma of the breast, it is supporting framework, the tissue which is supporting the breast. The breasts are present on the pectoral region and they are quite bulky in nature. So in order to provide a support to the breast, there need to be some underlying tissue, which is nothing but fibrous and fibrofatty tissue. So they are acting as a supporting framework in order to provide stability to the breast. Okay. So ये हमने discuss किया था अभी. Suspensory ligament of Cooper, which is a fibrous septa or strands, which is extending from clavicle and deep pectoral fascia to the overlying skin of the breast. And what is the function of the ligaments of Cooper? ये भी पूछा जाता है वाइवा में. They are suspending the breast tissue and maintaining the normal shape of the breast. The normal contour of the breast is maintained by the ligaments of Cooper. अगर ligaments of Cooper में कोई भी pathology हो जाए, कुछ भी pathological defect हो जाए, then the shape of the breast may be deteriorated. और ये कब होता है generally? Whenever the patient is in the first or the second stage of carcinoma. So that time the ligament of Cooper starts to degenerate, so the shape of the breast automatically starts to change from normal to a unhealthy side. Fat forms the main bulk of the gland. तो superficial fascia में होता क्या है? सबसे ज्यादा fat ही तो होता है. The superficial fascia is having fat and fibrous tissue, जिसमें fatty layer ज्यादा होती है ना? तो breast में bulkiest of the superficial fascia में आता है, जिसमें हमें bulk में fat मिलता है. Okay, again a picture in which you can see the ligaments of Cooper. Can you see? ये easy picture है, ऐसा exam में draw कर सकते हैं. Ligaments of Cooper, these are the lobes of the breast. Basically, these are the lactiferous area. Then you can see the lactiferous sinus and ultimately the lactiferous ducts. ठीक है? Okay. Now coming to the parenchyma of the breast, which is now the interior most tissue of the breast. This is the glandular tissue. Breast क्या है? Mammary glands है. क्या है? These are glands. तो अगर हम glands पढ़ते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा, histology का lecture हो गया क्या? या होगा? I think अब होने वाला है या नहीं, अगर नहीं हुआ है. You will read the histology of the glands. I hope you know the type of glands in body. Yes, there are exocrine glands, there are endocrine glands, है ना? और आपको पता हो तो salivary glands, sweat glands, sebaceous glands, ये तीन तरीके की आपको glands मिलती है जो secretion देती हैं. Salivary glands are secreting saliva. Yes, your sweat glands are secreting sweaty secretions, watery secretions. And your sebaceous glands are secreting oily or sticky secretions. तो ये जो हमारी breast है, this is nothing but it is a modified sweat gland. ठीक है? Forms mammary gland proper, which is a modified sweat gland. Very important MCQ question. Give an example of modified sweat glands. The answer is breast or mammary glands. If simple sweat glands के पूछते हैं तो और बहुत examples हैं body में, but अगर modified sweat gland का आता है, then it is the mammary glands which are modified. So जो glandular tissue है, ये mammary gland proper बनाता है. इसमें आपको पता है, फटाफट से देख लीजिए, 15 to 20 lobes मिलेंगे. They are arranged in a radial fashion around the nipple. Lobe consists of a lactiferous duct and surrounding clusters of acini or alveoli. ये देखो. These are the lobes, है ना? Now these lobes are being surrounded by, you can clearly see, देखो, lobes के surround में आपको क्या मिल रहे हैं?
बंच ऑफ एल्वियोलाई, इनको एसिनाई भी कहते हैं। ये आप वापस से ग्लैंड्स में पढ़ेंगे दोबारा, या तो एल्वियोलाई बोल सकते हो या एसिनाई, वर्ड आपने लंग्स में भी सुना होगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज द एल्वियोलाई, है ना, ऑफ द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, है ना। सो दीज आर द एल्वियोलाइज और द एसिनाइज which are present in each lobule, okay, and ultimately these will be secreting the secretion into the lactiferous ducts which is being stored in the lactiferous sinus, और जब भी न्यूबॉर्न को रिक्वायरमेंट होती है the newborn can suck it from the lactiferous ducts, the nipples which are present on the outer skin. तो ये एक स्टोरेज का काम करता है lactiferous sinus for each lactiferous duct. ऐसा तो नहीं है ना मिल्क प्रोड्यूस होता जा रहा है और वो बाहर निकल रहा है, no, it is only secreted out whenever there is a requirement from the newborn. So वो मिल्क जो बन रहा है कंटिन्यूस वो कहीं तो स्टोर होगा, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे डिमांड हुई कि तभी मिल्क बनेगा, नो, मिल्क नीड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द lobules in advance, but it need to be stored somewhere. So whenever the newborn needs to feed, it can feed, the newborn can feed from the nipples by sucking the milk from the 15 to 20 lactiferous ducts present on the you can say opening into the nipple, and ultimately more milk is then produced and stored in the lactiferous sinus. इसलिए ये sinuses present होता है. Okay. Okay, lobe consists of lactiferous ducts plus surrounding clusters of acini or alveoli. Each lactiferous duct converges towards the nipple and open on the tip of the nipple. Okay, here you can clearly see opening at the tip. Now, what is a lactiferous sinus? It is a dilation which is present of the lactiferous duct near its termination. Termination से पहले ही मिलती है हमें lactiferous sinuses. तो एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं. Coming to the blood supply of the breast now, very very important. इसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज सब इंपॉर्टेंट है. ब्लड सप्लाई की बात करते हैं. आर्टीरियल सप्लाई इज बाय वेरियस सोर्सेज. आप देख सकते हो, देखो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग एरिया से आ रहा है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें है लेटरल थोरैसिक आर्टरी, ये वाली. दिस यू विल बी स्टडिंग व्हेन यू विल बी स्टडिंग द एक्सिलरी आर्टरी, है ना. एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है. It is the main artery which supplies the breast. Then we are having internal mammary artery, which is also known as internal thoracic artery. So these are the perforating branches of internal thoracic artery. एक ही बात है, internal mammary artery भी कहते हैं internal thoracic को. Then we are having some lateral branches of the posterior intercostal artery. ठीक है, तो यहाँ से आपकी posterior intercostal arteries आ रही है, ये उसकी lateral branches है. Then we are having pectoral branch, okay, of the thoracoacromial artery. So this is the pectoral branch of the thoracoacromial artery. Now again, thoracoacromial artery is a branch of axillary artery. Lateral thoracic is a branch of axillary artery. तो जब आप axillary artery पढ़ लेंगे, ये सारी arteries आपको समझ में आ जाएंगी. And last but not the least is the superior thoracic artery. This is the superior thoracic artery. Again, it is a branch of axillary artery. ठीक है. Coming to the venous drainage, superficial veins will drain into the internal thoracic veins, जबकि जो deep veins हैं they will drain into the axillary vein and the posterior intercostal vein. तो ये आपको याद रखना है how the venous drainage is basically being done over the area of the breast. Innervation, अगर nerve supply की बात करें तो क्योंकि breast is not an autonomic viscera, it is present in the body wall, है ना. तो यहाँ पे कोई ऑटोनॉमिक सप्लाई नहीं आएगी. यहाँ पे हमारे पास ओनली सोमैटिक सप्लाई रहेगी. सोमैटिक मीन्स पर्टेनिंग टू द स्किन वॉल, स्किन एंड द बॉडी वॉल. सो यहाँ पे हमारे 2nd to 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स थ्रू एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस सप्लाई करती हैं. तो दिस इज द एंटीरियर ग्रुप ऑफ द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स एंड दिस इज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स, T3 to T6 and T2 to T6. So total 2nd to 6th intercostal nerves through their anterior and lateral cutaneous branches, they supply the breast. Cutaneous क्यों use कर रहे हैं? Because it is related with the skin. Breast is related with the skin, so that's why the supply is cutaneous. So we are saying anterior cutaneous and lateral cutaneous nerves, which are branches of 2nd to 6th intercostal nerves. ये आप देख सकते हैं. Again, this is a summarization of the structure of the breast. Up till now, the skin, the stroma, the parenchyma, the blood supply and the nerve supply. Now comes the topic which is important for clinical aspect, that is the lymphatic drainage of the breast.
So can you see over here, there are lots of lymph nodes present. Yes, this is the breast area, and here you can find axillary lymph nodes. ये axilla है ना, this is axilla, और यहाँ पे आपको axillary lymph nodes में और भी groups मिल रहे हैं. जो सबसे ऊपर की तरफ जा रही है वो है आपकी apical group, then the central group, the posterior group, the anterior group, the lateral group. Combinedly these 5 forms the axillary lymph nodes. ठीक है, इसमें हम सुप्राक्लैविकल नोड्स को इंक्लूड नहीं करते, दैट इज इन द सुप्राक्लैविकुलर रीजन. फिर दूसरी जो नोड्स आपको मिलती है वो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स मिलती हैं. देन वी फाइंड द इंटरनल मेमोरी नोड्स. यस, सो ऑल दीज लिम्फ नोड्स, एक आपको मिल रही है जस्ट बिलो द ब्रेस्ट इन द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द पेरिटोनियल कैविटी. पेरिटोनियल कैविटी इज द कैविटी इन विच द एब्डोमिनल विस्ट्रास आर प्रेजेंट, एंड ऊपर की तरफ होती है प्लूरल कैविटी. तो ये 2 कैविटीज हैं, सब डायफ्रेगमेटिक, बिलो द डायफ्राम सब डायफ्रेगमेटिक, एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स. तो ये सारे लिम्फ नोड्स हैं जो कि ब्रेस्ट के क्लोज एसोसिएशन में है. The lymph can be drained from all these lymph nodes. Okay, so whenever we need to check all these lymph nodes for a probability of carcinoma. So lymphatic vessels are divided into 2 groups here, superficial and deep. Okay, superficial lymphatics are draining the lymph from the skin over the breast except for the nipple and areola. तो पूरी की पूरी जो ब्रेस्ट की स्किन है वहां से जितना भी लिम्फ ड्रेन हो रहा है वो सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स में आएगा, जिसमें हम स्किन और एरियोला को यूज मतलब एस्केप कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. जो दूसरा लिम्फ है डीप लिम्फ, दैट इज बेसिकली डीप लिम्फैटिक्स आर ड्रेनिंग द लिम्फ फ्रॉम द पेरेन्काइमा, मीन्स नाउ द टिश्यू, द ग्लैंडुलर टिश्यू, ऑल्सो फ्रॉम द निपल एंड एरियोला. तो जो डीप लिम्फैटिक्स हैं दे आर द मेन अलार्मिंग साइंस for checking out for a carcinoma, because it is draining from the glandular tissue, it is also draining the lymph from the areola and the nipple, whereas superficial is only draining from the skin of the breast. तो आपको पता होना चाहिए superficial lymphatics क्या drain कर रहा है, deep lymphatic क्या drain कर रहा है. Now just below, or you can say on the posterior aspect of the areola, we find a very important plexus of the lymph vessels which is known as subareolar plexus of Sappi. ये बहुत important है. Subareolar plexus of Sappi is nothing but it is a plexus of lymph vessels which are present deep to the areola. It is draining into anterior axillary lymph nodes. अभी हमने axillary lymph nodes देखे थे. Yes, these are all axillary lymph nodes, जिसमें से ये वाला जो anterior group है यहाँ पर, इसमें कौन ड्रेन करेगा? The plexus of Sappi will drain the lymph into this lymph node. So ultimately इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी निपल और एरियोला वाला रीजन है उसका भी lymph through a plexus is drained into the anterior axillary lymph nodes. पहले क्या कंसेप्ट था? पहले ये कंसेप्ट था कि ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है ना, सुपेरोलेटरल, सुपेरोमीडियल, इंफेरोलेटरल, इंफेरोमीडियल, इसमें जो सुपेरोलेटरल क्वाड्रेंट में ये क्या है? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पैन से है. तो यहाँ पर ये जो ड्रेनेज था ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पैन से होता हुआ एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड तक पहुंचता था. बट नाउ व्हेन वी हैव रिसर्च मोर इट इज बीइंग फाइंड आउट कि वैसे भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ प्लेक्सस ऑफ सैपी व्हिच इज आल्सो डूइंग द सेम फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग और टेकिंग द लिम्फ फ्रॉम द लिम्फैटिक वेसल्स इनटू द एक्सिलरी एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड. ठीक है, वही चीज इसमें मेंशन की गई. So, जो लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रही है ब्रेस्ट को, उनके नेम देख लीजिए. एक्सिलरी लिम्फ नोड्स विच इज ड्रेनिंग मैक्सिमम, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रुप्स है, सेंट्रल है, एपाइकल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लेटरल है. ठीक है. देन इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स लाई अलोंग इंटरनल थोरैसिक मेमोरी आर्टरी, ड्रेन मीडियल पार्ट. पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल few lymphatics, but they are draining from lower lateral quadrant of breast, है ना. They are following the posterior intercostal vessels and drain into posterior intercostal nodes. Yes. Then we are having, मैंने भी बताया था आपको, subdiaphragmatic and subperitoneal lymph nodes. Yes, which is present just below the diaphragm and the peritoneal region of the abdomen. Yes. So there are few lymphatics from this lower medial quadrant. ये lower medial वाला हो गया. आप देख सकते हो, this is lower medial, this is lower lateral, this is upper lateral, this is upper medial. So जो lower lateral quadrant, lower medial quadrant है, वहाँ पे आपके सब diaphragmatic और सब peritoneal lymph nodes मिलती हैं. Then we are having a important MCQ question.
and this is also being taken during your clinical cases. जब आप clinical cases की classes attend करेंगे उसमें भी आएगा Rotter's notes. What are Rotter's notes? These are interpectoral nodes. मतलब कुछ lymph nodes ऐसे भी हैं जो pectoralis major और minor के बीच में मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं Rotter's node. और ये they also drain lymph from the mammary glands. ठीक है. Apical group of lymph nodes, again it is draining into the axillary lymph nodes. Okay. Now there are some interesting facts related to the lymph nodes. Again this question related to the clinical aspect of the breast. Surgically, जब हम clinician जब हम surgical side में जाते हैं, है ना, when you take general surgery or when you are going into medicine, okay, उस टाइम पे पीजी के ड्यूरेशन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आएगा. सर्जिकली एक्सिलरी नोड्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 बेसिक टाइप्स. कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक है हमारा लो नोड्स लेवल 1, एक है हमारा मिडिल ग्रुप ऑफ नोड्स लेवल 2 और एक है हमारा एपाइकल ग्रुप लेवल 3. आप देख सकते हो ये वाला जो ग्रुप है दिस इज लेवल 1 ग्रुप ऑफ नोड्स, लेवल 2 एंड लेवल 3. जो लेवल 1 है सबसे नीचे की तरफ है इनसे लेवल में, तो ये लो नोड्स कहा जाता है और इसमें जनरली पेक्टोरालिस माइनर को एक रेफरेंस लिया गया है. द मसल पेक्टोरालिस माइनर, बिलो द पेक्टोरालिस माइनर अगर कोई लिम्फ नोड्स मिलते हैं तो उनको हम लेवल 1 में डाल देते हैं. ठीक है. सेकंड जो है वो है लेवल 2. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वाइवा में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लेवल 2 इज बेसिकली प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द पेक्टोरालिस माइनर. ठीक है. एक होता है पेक्टोरालिस माइनर के नीचे लेवल, बिलो, है ना, बिलो. फॉर एग्जांपल दिस इज पेक्टोरालिस माइनर मसल, तो बिलो लेवल 1, है ना. एक होता है बिहाइंड मतलब पीछे, दैट इज लेवल 2. और थर्ड वाला है अपर बॉर्डर, दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर. इसके ऊपर अगर हमें जो भी लिम्फ नोड्स मिल रही हैं उन्हें हम बोलते हैं लेवल 3 एपाइकल ग्रुप. सो लेवल 1 ग्रुप इज नोन एज लो नोड्स, लेवल 2 इज नोन एज द मिडिल ग्रुप एंड लेवल 3 इज नोन एज एपाइकल ग्रुप. ठीक है. इस तरीके से सर्जिकली हमने लिम्फेटिक नोड्स को डिवाइड किया, नॉट एनाटॉमिकली. ऑलवेज रिमेंबर एनाटॉमी रन्स on a different track, surgery runs on a different track. ठीक है. क्लिनिशियंस और जो सर्जन्स होते हैं वो थोरैक्स, जैसे कि थोरैक्स में अगर हम एंटर कर रहे हैं इसे बोलते हैं थोरैसिक इनलेट और यहाँ से इधर निकलते हैं इसे बोलते हैं थोरैसिक आउटलेट. Yes, for example, if I enter into the thoracic cavity, I say I am entering through the inlet and I am coming out through the outlet into the abdominal cavity. ये कौन बोलता है? Anatomist. But अगर हम clinicians की बात करेंगे तो वो उल्टा रन करते हैं, वो इसे बोलते हैं इनलेट एंड दे से दिस एज द आउटलेट. सो दोनों बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. तो अगर हम बात करते हैं सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहां पे हम लिम्फ नोड्स को लेवल के हिसाब से जज करते हैं, जबकि एनाटॉमी में हम उन्हें नेम के हिसाब से करते हैं. एक्सिलरी ग्रुप, यस, वी आर हैविंग इंटरमैमरी ग्रुप, है ना, वी आर हैविंग द सब डायफ्रेगमेटिक ग्रुप. सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस. ओके. सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ वन साइड कम्युनिकेट्स विद अदर. क्योंकि सुपरफिशियल है, जो भी सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स राइट साइड के हैं वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे लेफ्ट साइड के साथ. ठीक है. नाउ कम्स द डेवलपमेंट. क्योंकि ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डिटेल डेवलपमेंट में अभी नहीं लूंगी, वो आपकी एम्ब्रियोलॉजी क्लासेस में लिया जाएगा. बट हमें पता होना चाहिए किस तरीके से डेवलप हो रही है ब्रेस्ट. So development of the parenchyma. Parenchyma of mammary gland develops from ectodermal bud arising basically from the mammary ridge. This mammary ridge is very important. अभी मैं discuss करूंगी. Mammary buds form solid cords that grow into surrounding mesoderm. Later these cords get canalized to form the lactiferous ducts. Okay. Whereas their terminal parts form secretory acini. Fibrous stroma, fat, and myoepithelial cells. What is the function of myoepithelial cells? Anybody knows? What is the meaning of myoepithelium? Those cells which are contracting and relaxing continuously in order to produce secretion. तो यहाँ पे secretion की requirement रहेगी. Yes. What is the secretion? The milk. Yes. So surrounding mesoderm forms fibrous stroma, suspensory ligaments and myoepithelial cells. ठीक है.